नेक्स्ट टॉपिक है origin of earth. The earth is one of the planets in the solar system. Its origin is not different from the other planet. Basic चीज़ है. Different scholars have propounded different theories regarding the subject. One of the earliest works on the subject was presented by Immanuel Kant. इनका नाम आता है काफ़ी ज़्यादा. He propounded the theory of the nebulous material. In 1755 AD, Immanuel Kant presented the gaseous hypothesis. याद रखिए एग्जाम में डायरेक्टली आता है. Later in 1796, Laplace presented his research on the topic, which came to be known as the nebular hypothesis. Laplace, okay, gaseous का Immanuel Kant, Laplace का nebular. In 1905 AD, Chamberlain and Moulton proposed the Chamberlain-Moulton planetesimal hypothesis. तो इनका ये है, ये याद रखिएगा, मैच द कॉलम में आ सकता है. To describe the formation of the solar system, the theory was based on the idea that a star passed close enough to the sun early in its life to cause tidal bulges to form on its surface, causing the material to be injected repeatedly from the sun. Due to the gravitational effect of the passing star, material would cool and condense into the numerous small bodies, which they called planet. In 1919, the famous British scientist James Jeans propounded the tidal hypothesis. Another scientist, Sir Harold Jeffrey, made some correction to it. After some years, the theory of the wandering star around the sun started getting acceptance. The theory was called binary theories. In 1943, Otto Smith propounded the interstellar dust hypothesis. He proposed that the sun in its present form passed through a dense interstellar cloud and emerged enveloped in a cloud of dust and gas. Otto Schmidt of Russia and Carl Weizsäcker of Germany revised the nebular hypothesis. They believed dust-like solar nebula with heavy helium and hydrogen surrounded the sun. A disk-shaped cloud was created by the friction of the particles in the solar nebula. The planet was formed due to the accretion process. Okay, ये process याद रखिए, accretion process. In modern times, the most accepted theory regarding the origin of the universe is Big Bang theory, also known as the expanding universe theory. इसी को expanding universe बोलते हैं, यही Big Bang है. Universal expansion was proved by the Edwin Hubble in 1920. According to Big Bang theory, a violent expansion of a tiny body occurred, which resulted in a huge expansion. The change of some particles into an energy form. Due to this expansion, some energy got converted into matter. This happened 13.7 to 13.8 billion years ago. Another proof of this, Edwin Hubble concluded that galaxies are drifting apart. This is important observational evidence consistent with hypothesis of an expanding universe. After initial expansion, universe cooled sufficiently to allow formation of the subatomic particles. Later simple atoms, giant clouds of these elements later combined due to gravity, eventually forming early stars and galaxies. The galaxies further broke down, resulting in formation of the stars. Star broke down, resulting in formation of the early planets. In 1907, John Joly used his knowledge of the mineralogy to figure out the age of the different minerals. According to him, certain rock-forming minerals were often characterized by presence of a small circular dark spot on the concentric rings. He called it the mineral halo. Professor H.H. Russell used the uranium-lead, thorium-lead to determine the age of the Earth. According to it, the age of our planet is 2 billion and 25 crore years, 4 billion and 60 crore years old respectively. Okay, बेसिक है. ओके, मतलब इससे जो एज पता चली वही बताते हैं यहाँ पे. रेडियोमेट्रिक डेटिंग हैज प्रूवन टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल. देखो, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मोस्ट सक्सेसफुल है way of figuring out the earth age. The uranium and thorium are found in one form or other in different quantities in every rock formation. The uranium dating technique to determine the age of earth becomes very useful.
तो हम रेडियोमेट्रिक और यूरेनियम डेटिंग दोनों यूज करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग काफ़ी यूजफुल है. ओके. देन नेक्स्ट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री. देखो ये दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं. जियोलॉजिकल हिस्ट्री. जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ follows the major events in the earth past based on the geological time scale. The first effort to understand the geological history of the earth were made by the French naturalist Comte de Buffon. At present, the geological time scale is used, which is system of the chronological dating that relates geological state to time. The primary defined division of the time are eons. Eons are divided into eras, which are in turns divided into periods and epochs. सबसे पहला eons, then eras, then periods and epochs. Then Precambrian era. देखो era कहाँ पे, यहाँ पे. Okay. The earth has initially molten due to extreme volcanism and frequent collision with the other bodies. Water began accumulating in the atmosphere. The only flora present at that time was the sea grasses. बहुत important, sea grasses Precambrian में थी. In the warm ocean, emergence of the spineless creatures also took place. The geological period is one of the several subdivisions of the geological time. Every time period is named after its characteristics events. अब देखो इसमें क्या है, पहला प्री कैम्ब्रियन के बाद देखेंगे इसमें कैम्ब्रियन पीरियड. ठीक है. द वाटर ऑफ द कैम्ब्रियन पीरियड appear to have been widespread and shallow. The seas saw emergence of the creatures with the spinal cord along with the spinal cord during this period. Then Ordovician period. By this time, process of the mountain formation had started. Thus, period witnessed heavy volcanic activity. Flora and fauna were only limited to the sea. Then Silurian period. The period witnessed the emergence of the terrestrial flora fauna. Leaf formation. अब देखो लीफ फॉर्मेशन यहाँ पे है. वाज येट टू नॉट प्रेजेंट. ओके, अभी भी यहाँ पे नहीं है. डाइवर्सिटी इन द स्पीसीज ऑफ द फ्लोरा वाज आल्सो सीन. ए वेरी प्रोमिनेंट फिनोमिना ऑफ दिस पीरियड वाज द लार्ज स्केल डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द कोरल रीफ. देखो सिलूरियन पीरियड में कोरल रीफ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ का. देन डेवोनियन पीरियड. द डेवोनियन पीरियड वाज ए टाइम of great tectonic activity, as a result of which it witnessed large scale mountain formation and volcanic activities. Various varieties of fish emerged and evolved during this period. Hence the period is also known as the age of fish. इसी को age of fish बोलते हैं. कौन सा है यहाँ पे, डेवोनियन पीरियड. याद रखिएगा, डेवोनियन पीरियड आपका एज ऑफ फिश भी बोलते हैं. देन आता है कार्बोनीफेरस पीरियड. आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट different plates. These plates are not stationary but keep moving because of the tectonic activity. Hence, these plates are responsible for the shifting of the continents and oceanic floods into the various parts of the planet. The Carboniferous was a time of the active mountain building as a supercontinent Pangaea came together. Okay. The supercontinent was surrounded by the large water body. The sea was named Panthalassa by the Wagner. ये सब जो गोलाकार है इसको ध्यान से पढ़िएगा. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया इज लॉरेशिया. दैट इज उसमें कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया. द साउदर्न पार्ट वाज गोंडवाना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मडगास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. देन पर्मियन पीरियड आता है. पर्मियन पीरियड. ड्यूरिंग दिस पीरियड बिकॉज ऑफ द जियोलॉजिकल टर्मोइल द बर्थ ऑफ द हाई माउंटेन रेंजेस वाज सीन इन द यूरोप, Asia and Eastern United States of the America. Another factor witnessed was increase in the terrestrial species. Then Triassic period. The period witnessed the emergence of the carnivorous aquatic reptiles that had a resemblance to the characteristics of the fish. The period also witnessed the first evolution of the terrestrial mammals. Flies and termites also came into picture during this period along with the origin of the dinosaur. Then Jurassic period. This period saw the development of the size and diversity of the terrestrial reptiles. Some aerial birds such as Archaeopteryx also emerged during this period. The period was dominated by the dinosaur. देखो जुरासिक पीरियड में डायनासोर. ओके, इसीलिए जुरासिक वर्ड वाली मूवियाँ आती हैं. ओके, बेसिक चीज़ें, मतलब कनेक्ट करो चीज़ों को. देन archaeological evidence of the dinosaur in India has been found in Rayoli in Mahisagar district of the Gujarat. याद रखिएगा, Rayoli in Mahisagar district in Gujarat and in
बारासिमला हिल्स नियर द नर्मदा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट. ओके, बारासिमला हिल नर्मदा जबलपुर और रयोली इन महिसागर गुजरात. देन Cretaceous period, geological development and transformation was very active during this period. As a result, the Rocky Mountain, Andes Mountain, Europe, and Isthmus of the Panama were formed. The Tertiary period has also characterized into different epochs. अब देखो जो टर्सरी पीरियड वो भी कई इपॉक्स में डिवाइड है, जैसे पैलियोसीन इपोक, इयोसीन इपोक, ओलिगोसीन इपोक. ओके, अब देखो पैलियोसीन इपोक में डिटेल, बाकी इयोसीन में द इपोक सा द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड हिमालयन ओरोजेनी. बाकी यहाँ पे ओलिगोसीन इपोक में द इपोक विटनेस्ड एक्सपेंशन ऑफ द लैंड मास. ये इंपॉर्टेंट है. जियोलॉजिकल एक्टिविटी continued in the Europe and America and formation of the Alps started. Then Miocene epoch में epoch witnessed a lot of the geological activity as a result of which Alps mountain range was formed. There was an uplift in the height of the lesser Himalaya and the greater Himalaya. मतलब Miocene में lesser Himalaya और greater Himalaya की height थोड़ा सा बढ़ी. Then Pliocene epoch. Pliocene epoch क्या है? North Sea, Black Sea, Arabian Sea, Caspian Sea were formed. The formation of the Siwalik range also took place during this epoch. Siwalik range. Okay. इसमें. Then Quaternary period has been divided into two epochs, Pleistocene epoch and Holocene epoch. Then Pleistocene epoch में क्या है? The Pleistocene epoch is defined as the time period that began nearly 2.0 million years ago and that lasted until about 10,000 years ago. The most recent ice age occurred then. Almost all the continents experienced glacier formation. The ice sheets spread was characterized into 4 different times. Hence, sub-ice age have been classified and named according to their area of the occurrence. They are as follows, जैसे Nebraskan, Kansan, Iowa, Wisconsin in North America, and similarly Albrecht, Pench, Edward Bruckner classified the ice age of the Europe. Then they are follows as follows, जैसे Ganj, Mendel, Rees, Worm. Then Holocene epoch. Holocene epoch began 10,000 years ago. The melting of the ice sheet led to the re-emergence and expansion of the forest in the Europe. Aquatic flora and fauna evolved into their present biological characteristics. The period between 1300 and 1870 AD is known as the Little Ice Age. इसको Little Ice Age बोलते हैं. During this time, Europe and North America were much colder as compared to the 20th century. Okay. Then question देखते हैं. Which of the following scholar has emerged suggested that the Earth has originated from the gases and dust of the particle? O. Smith. याद रखिएगा. Which of the following method is used to determine the age of the earth? अब देखो कार्बन डेटिंग नहीं, जर्मेनियम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, यूरेनियम डेटिंग ये इंपॉर्टेंट है, यही करते हैं. ठीक है, याद रखिएगा, दोबारा आ सकता है क्वेश्चन में. Then Great Ice Age is related to Pleistocene. ऐसे आता क्वेश्चन. Which of the following periods has generally been considered to be the Little Ice Age? Little Ice Age तो काफ़ी लास्ट में आया था ना, जैसे 1650 से 1870 AD, ये वाला टाइम पीरियड हो सकता है. Then what was the period of the dinosaur? ये इंपॉर्टेंट है. 18 करोड़ ईयर्स एगो, ये आ सकता है दोबारा. ओके, और कहाँ मिला था आपको पता ही है, रयाली आप महिसागर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे गुजरात में, और बारासिमला हिल्स जबलपुर नर्मदा के पास में. कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी. बेसिक. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड? कौन सा नहीं था? देखो नॉर्थ वाली चीज़ें नहीं थी, साउथ वाली सारी थी. अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सारी थी, नॉर्थ अमेरिका नहीं था. ओके. द साउदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम द पेंजिया इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड. ओके. India was the part of the ancient Gondwana land supercontinent. It includes the following landmass of the present. कौन कौन से? देखो साउथ इंडिया, साउथ वर्ल्ड में कौन कौन से? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सारे. ओके. कोको प्लेट
द बिटवीन किसके बीच में, सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट, मतलब ये सेंट्रल अमेरिका है ना, ऐसे वाला, ऐसे फिर ऐसे है चिली यहाँ पे नीचे, तो ये वाला जो यहाँ कोकस प्लेट है, यहाँ कोकस प्लेट सेंट्रल अमेरिका हो गया और पैसिफिक हो गया, ओके, इन दोनों के बीच में है, यही दिया है ऑप्शन में. On the earth originally there was only one huge landmass which is known as the Pangea. First fossil evidence for the existence of life on the earth is. अब देखो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है कि फॉसिल का एविडेंस कब है, बाकी इसका देख लीजिए. फर्स्ट फॉसिल एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ डेट्स बैक टू द आर्कियन ईवन अप्रॉक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. तो यहाँ से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है. 3.5 बिलियन डायरेक्टली यहाँ पे किसी में नहीं है. ओके, जैसे 3 बिलियन ये थोड़ा सा आसपास का है. द थ्योरी दैट स्टेट्स पीस ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर in constant slow motion driven by the most movement in the mantle is called theory of the plate tectonics. ये 2-3 बार आ चुका है, तो यही सीधा स्टेटमेंट. देन यहाँ देखते हैं, which one of the following are the evidence of the phenomena considered drift. The belt of the ancient rock from the Brazil coast matches with the those with the Western Africa. एकदम बात सही बात है. The gold deposit of the Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. एकदम सही बात है. The Gondwana system of the sediments from the India is known to have the counterparts in 6 different landmasses of the southern hemisphere. एकदम सही बात है. देखो तीनों एकदम बेसिक स्टेटमेंट है और तीनों करेक्ट है. ओके, यहाँ से सी स्टेटमेंट करेक्ट है. 1 2 3 2025 का क्वेश्चन यूपीएससी. देन द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट इज, क्या बोलते हैं उसको, सी फ्लोर स्प्रेडिंग. इससे नया अर्थ को एक से खत्म होगा, सबडक्शंस खत्म होगा, कन्वेक्शंस खत्म, ये इससे ऐड होगा. देन फोल्डिंग इज ए रिजल्ट ऑफ किसका है, ओरोजेनिक फोर्सेस. विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस डू नॉट कम अंडर द डायस्ट्रोफिज्म. देखो डायस्ट्रोफिज्म कौन नहीं है, डायस्ट्रोफिज्म इज अ फिनोमेना रिलेटेड टू द जियोमॉर्फोलॉजी. इवन वाइल इंटरनल forces keep the crust solid, there is a constant stirring and shifting occurring in the some parts of the crust. Significantly, the earth movement refers to the slow, abrupt or quick changes in the earth crust caused by the earthquake or other motion influenced by the internal forces. These include abrupt movement and gradual or diastrophism movement. Heterogenic process do not come under the diastrophism. तो वही चीज़ इसमें पूछा गया है, do not come, तो हेट्रोजेनिक तो आएगा नहीं, अर्थक्वेक नहीं आएगा, ये सब, तो इसलिए इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है. ओके, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब देखो इसमें क्या है ना, कई सारे प्रोसेस दिए गए हैं, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. विच आर द फॉलोइंग अबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. कौन सा, वो भी ऐसी बात है, सारे आएंगे, ये सारे प्रोसेस आएंगे. 1 2 3 4 5 6. ओके, देन अगला क्वेश्चन है, अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके, अब पतपारा फॉर्मेशन, खेतौनी फॉर्मेशन, बघोर फॉर्मेशन, सिहावल फॉर्मेशन. ठीक है, अब देखो इनका ईयर क्या है, थोड़ा सा टफ तो है इस वाला, क्योंकि आपको इतना एग्जैक्ट याद रहना थोड़ा सा मुश्किल है. बाकी 4 1 3 2 सीक्वेंस है, सिहवाल लोअर पैलियोलिथिक, पतपारा मिडल, बघोर अपर पैलियोलिथिक. ओके, देन खेतौनी न्यूलिथिक एंड माइक्रोलिथिक. तो बघोर शायद आपने पढ़ा होगा अपर पैलियोलिथिक, बाकी ये सब तो मतलब थोड़ा सा वैसा है. देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट रेप्टाइल, फर्स्ट इंसेक्ट, सेल्ड एनिमल, फर्स्ट मैमल्स. देखो ये आता है क्वेश्चन में, इनका सही क्रोनोलॉजी क्या है, फर्स्ट रेप्टाइल आया, देन कीड़े मकोड़े, देन सेल्ड एनिमल, देन फर्स्ट मैमल्स. ये जो दिया गया यही सीक्वेंस सही, बट इसमें कोई भी सही नहीं दिया गया है. देन राजस्थान डिजर्ट और थर्ड डिजर्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका है, प्लेस्टोसीन एंड रिसेंट डिपोजिट का ही एक्सपेंशन है. ओके